Good morning, students. During the revision process of SA1 examination, today we are going to discuss one topic that I have already written on the board. Topic name is the quadratic equation and its roots, relating to the class 10 standard. This topic we are going to study today. Now, what is the first question we have? What is the meaning of quadratic equation? कि quadratic equation क्या है? We can try to understand it. What is the meaning of quadratic equation? Quadratic equation is a combination of constant and variable. Quadratic equation क्या होता है? Constant और variable का combination होता है. What is the meaning of combination? We know this is just like a relation. एक संबंध होता है constant और variable में. Students, here again two questions arising in our mind. What is the meaning of constant and variable, and how constant and variables in the combined form become or produce a quadratic equation? Now, firstly, what is the meaning of constant? Constant is a fixed value. Fixed value. That is, fixed means all the numericals are the examples. So you can say that 2, 5, 7, 9. All the numericals are known as constant. The reason is that because the value of these numericals always fixed. Suppose you have a 5 rupees note, it means that 5 rupees note have the value 5, that is fixed. It means all the numericals are known as the constant. Actually, student, in mathematics we have two types of quantity. One is constant and second one is a variable. Now, what is the meaning of variable? A value which is not fixed means a quantity which is not fixed, that is known as a variable. If we want to take examples of variables, all the alphabets, जितने भी alphabets हैं, it means A to Z, ये सभी जो होते हैं हमारे पास variable होते हैं. What is the reason behind it? Because these variables have not a fixed value. इनकी कोई fixed value नहीं होती है. As up to this class you have seen these variables have many different values. Many values, or you can say the different values. That's why these alphabets are known as variables. Now, next question: how constant and variable combine to each other? Students, we have a 4 fundamental operation in mathematics: plus, minus, multiplication, and division. When with the help of these fundamental operations, constant and variable are combined, then we got an algebraic expression which we have studied in the earlier class. But here we are studying what is the meaning of quadratic equation. A combination of constant and variable, that is known as a quadratic equation. Now, students, firstly I want to tell what is the mathematical form or standard form of a quadratic equation. As I have noted here, the mathematical form of a quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. Here a is not equal to 0. Why a is not equal to 0? Because if a is equal to 0, this is removed from here. Then it becomes bx plus c. That is a linear form. But here we are studying quadratic. Quadratic means a variable in which the quadratic equation we have given, that's degree must be 2. That is known as a quadratic equation. That's why, see students, ax square plus bx plus c is equal to 0. This is the mathematical form of a quadratic equation. Here a is not equal to 0. What's the reason behind it? If a is equal to 0, this term removed from here. On the left portion we have bx plus c. bx plus c in the form of a linear, not in the quadratic form. Because if we have required a quadratic equation, then the power or highest power of the variable, indirectly we can say the degree, that must be 2. That's why if bx plus c is here, that is in the linear form. Now, one more point is here. Here A, B and C is the symbol of belongs to. Student, this is the symbol of belongs to say something. R is representing here real numbers. Real number means all the sets of numbers are involved in it. It means natural number, whole numbers, all the integers,
all the rational numbers, all the irrational numbers, all the sets are involved in it. रियल नंबर में वो सभी सेट यहाँ पर शामिल होते हैं. यहाँ पर A, B, C इनकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है? These value belongs to a real number. So students, come to the main point here again. Quadratic equation, that is a combination of constant and variable, and here I have noted one example. X here plus 4x plus 4 is equal to 0, is equal to 0. Here when we observe the variable, here the power of x is 1, here the power of x is 2, here the power of x is 0, here the power of x is 0. Now what is the highest power of the variable here? Highest power of the variable here is 2. That's why it is a quadratic, because highest power here, that, which is 2, that is known as degree. Here I have noted what is the meaning of degree. Students, highest means सबसे बड़ी जो पावर होगी, highest power of the variable known as degree. It means we can say that in a quadratic equation we must have and it is required the highest power, means सबसे बड़ी जो पावर है जिसको हम डिग्री करें वो 2 होना चाहिए. Only in that case the given algebraic expression become a quadratic equation. As well as with the combination of constant and variables, and the next point, highest power, that is degree, that must be 2 for the quadratic equation. One more point is here, we have required the sign of equality also here, because here we are studying quadratic equation word produced from the symbol equal. That's why equal sign is required here. तो स्टूडेंट्स ये था मीनिंग ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स रहते हैं. नाउ व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट्स, जीरोस और सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं, सॉल्यूशन क्या होते हैं. स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, रूट्स, zeros and solution having the same meaning. Roots, zeros and solutions having the same meaning here. It means a quadratic equation के roots, zeros और solution एक ही meaning है. Now what is the meaning here? In which variable we have given the quadratic equation? उस variable की कौन सी value इसको satisfy करती है. सेटिस्फाई का मतलब लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल बनाना. तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वो पर्टिकुलर जो वैल्यू होगी वो उसका रूट कहलाएगी, जीरो कहलाएगी, या फिर आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन बोल सकते हैं. सपोज हियर आई हैव गिवन वन एग्जांपल, x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0. इफ जनरली यू विल स्टडी हियर दिस एग्जांपल, अगर हम इसको जनरल फॉर्म में स्टडी करें, x की कौन सी वैल्यू, स्टूडेंट x की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर सकती है, मींस इसकी लेफ्ट साइड को राइट के इक्वल बना सकती है. सपोज यू हैव पुट हियर पुट x is equal to 1. what will happen here? Square of 1 minus 4 equal to 0. when you solve the left hand side, square of 1 minus 4 equal to 0. 1 minus 4, calculation minus 3 is equal to 0. That is not possible. It means students, we can say that x is equal to 1 is not a 0, not a solution, not a root of this quadratic equation, because it is not satisfying the given quadratic equation, क्योंकि ये इसकी लेफ्ट साइड को राइट के इक्वल नहीं बनाता. तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे माइंड में यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, what is the actual method? What is the actual method to find out the zeros of a quadratic equation? Students, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, quadratic equation के जब हम रूट्स निकालते हैं, there are two types. The first one is complete quadratic, the second one is incomplete quadratic. Today in this video you are going to study how to find the zeros of a quadratic equation which is not in the complete form. As I have already noted here two examples. How to find the zeros of a quadratic equation? Today the first case we have
how to find the zeros of a quadratic equation that is not in complete form. See here, x square minus 16 is equal to 0. Obviously यहाँ पर x वाली टर्म नहीं है. The second example, 3x square minus 27x is equal to 0. Obviously यहाँ पर constant individual single जो constant है that is not present in this form. That's why these two examples are the examples of incomplete quadratic. Now how to find the zeros of these type of quadratic equation? Dear student, मैं आपको बताना चाहूँगा इस टाइप की जो quadratic equation होंगी जो कि complete form में नहीं होगी. Complete means जो इस जैसी फॉर्म में नहीं होगी, इस जैसी फॉर्म में नहीं होगी या फिर इस जैसी फॉर्म में नहीं होगी. इट मींस वहां पर वेरिएबल की पावर 2 फिर 1 फिर कांस्टेंट भी होना चाहिए. जो इस जैसी फॉर्म में न होकर कुछ ऐसे होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म, तो वहां पर उनके जीरोस कैसे निकालेंगे? Student, in early classes you have studied the transposition method. Here we use the transposition method because if you will try to find the zeros of these type of quadratic equation with the help of trial and error method, उसके अंदर वैल्यू पुट अप किया फिर उसको चेक किया लेफ्ट साइड राइट इक्वल आता है या नहीं आता, तो दिस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग मेथड यार. इससे आपका जो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और एक सही जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए हमें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है. तो सबसे इजी मेथड क्या है? वी कैन यूज द ट्रांसपोजिशन मेथड. As I have noted two examples here. Now I am going to demonstrate how to find the zeros of a quadratic equation which is not in the complete form. See here, x square minus 16 is equal to 0. Students, when you will try to find its zeros with the help of transposition method, obviously you will transfer one number with one number from left to right or right to left. Now we shall start to solve it. X square minus 16 is equal to 0. X square is equal to 16. Obviously when you transfer minus 16 here, it becomes positive. Now x is equal to 16. When you transfer square from left to right, it becomes square root, and in the front we mention here plus and minus. Now as students, you know very well what is the square root of 16? 4, because 16 is the square of 4. Now what are the zeros here? Plus minus 4. This is the value of x. It means there are two values of x. X is equal to 4 and x is equal to minus 4. Dear students, these are the two zeros. Two zeros. Start. Now students, we can take the second example. अभी दूसरे एग्जाम्पल को देखेंगे जो कि हमारे पास एक इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल है. बिकॉज यहाँ पर x की पावर 2 x की पावर 1 कांस्टेंट इंडिविजुअल टर्म यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है. दैट्स व्हाई ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इनकम्प्लीट है. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, हाउ वी कैन सॉल्व इट? इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? ये भी बिकॉज एक इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक है, तो इसको हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम ट्रांसपोजिशन मेथड का सहारा लेंगे. नाउ हाउ वी कैन सॉल्व इट? वी कैन स्टार्ट इट. 3x square minus 27x is equal to 0. इफ यू आर ऑब्जर्विंग कि यहाँ पर जो आपके दोनों न्यूमेरिकल्स हैं, अगर वो सेम नंबर के मल्टीपल हैं तो आप इनमें से कॉमन भी ले सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली ट्रांसलेशन मेथड भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं. अभी जैसे जो फर्स्ट स्टेप को मैं बता रहा हूँ कि ऑब्वियसली वैल्यू ऑब्जर्व 3 and 3 9 27 है. इट मींस 3 और 27 3 के मल्टीपल हैं, तो इट मींस वी कैन टेक 3 एज अ कॉमन. ऑल्सो अगर हम दोनों टर्म्स को यहाँ पर देखें तो here x है here x, it means single x हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं. When we start to solve it, we can take common 3 and x from here, from the first term and from the second term. 3 come out, obviously 1 is left, 1x here, 1x come out and 1x left here. Now from 27, when you take the common as 3, it means indirectly आप क्या करोगे? 27 को 3 से डिवाइड करोगे. 3 9 the 27. It means 9 left. X already come out is equal to 0. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अभी मेरे पास दो नंबर आ गए हैं 3x and x minus 9. ये दो हमारे पास जो नंबर हैं और जिसका कुछ हिस्सा जो अलजेब्रिक फॉर्म में भी है, उनकी जो प्रोडक्ट नजर आ रही है वो 0 है. तो इसका मतलब क्या है? या तो फर्स्ट नंबर 0 है तब प्रोडक्ट 0 है,
या फिर सेकंड नंबर 0 है तब प्रोडक्ट 0 है, या फिर दोनों ही नंबर 0 के इक्वल हैं तब प्रोडक्ट 0 है, बट हमें यहाँ पर क्लियर नहीं है। तो दैट्स व्हाई हम इनके जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए गिवन क्वाड्रेटिक के जीरोस को निकालने के लिए दोनों नंबर्स को 0 के इक्वल पुट अप कर देंगे कुछ इस तरीके से। 3x is equal to 0. In the second case you can say that x minus 9 is equal to 0. Now individually we can solve, अलग अलग इनको हल किया जाएगा कुछ इस तरीके से। 3x is equal to 0, then x is equal to 0. 3 multiplication form है, when you transfer in right hand side it will divide to 0. It means x is equal to 0. This is the first solution, first root, first 0 of this quadratic equation. Now we can find the second. X minus 9 is equal to 0, x is equal to positive 9. Here student, x is equal to positive 9 and x is equal to 0. These two values are the solution zeros or roots of the given quadratic. Finally, students, I want to tell एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोस हो सकते हैं। स्टूडेंट, ये हमारे पास एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोस हो सकते हैं। तो बेटा मैं आपको बताना चाहूँगा द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एनी इक्वेशन डिपेंड ऑन इट्स डिग्री। ऑब्वियसली जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ते हैं हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 होता है। इट मींस हाईएस्ट पावर जो होगी उसके उतने ही जीरोस होंगे। ऑब्वियसली यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका डिग्री 2 है, तो इसके 2 जीरोस जो हैं पॉसिबल होंगे। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो यू हैव लर्न अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट्स, जीरोस एंड सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन and how to find the zeros. In this video you have seen only how find the zeros of a quadratic equation which is in incomplete form, जो कि proper quadratic नहीं है। Students, in the coming video you will see how to find the zeros of a quadratic equation which is in the complete form. Thanks, have a nice day.